टेक्नोलॉजी कैसे जुड़ रहा है। यही नहीं, आपदा के समय हम दुनिया पर निर्भर नहीं, मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया। तभी तो भारत ने 220 करोड़ वैक्सीनेशन करने का काम किया, जो दुनिया के देश सोच भी नहीं सकते थे, भारत के लोगों ने करके दिखाया है। और सही माने में वसुधैव कुटुंबकम की अगर मैं बात करूं, तो दुनिया को एक परिवार मानकर नरेंद्र मोदी जी ने एक ही देश के लिए नहीं, 100 से ज्यादा देशों के लिए वैक्सीन देने का और दवाइयां देने का काम भी हमारे भारत ने ही किया है। तो प्रवासी भारतीयों को इस बात पर गर्व भी होना चाहिए। यही नहीं, हमारा जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, उसके मैजिकल नंबर्स भी $400 बिलियन से ज्यादा हो गए हैं। और यही नहीं, भारत का अपना इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट जो है, जो हम बात करें इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, वो INS विक्रांत भी हमने आजादी के अमृत काल में 75वें वर्ष में भारत को दिया है। स्पेस, डिफेंस और ड्रोन सेक्टर ये नई उम्मीदें लेकर भारत में उभर रहा है और नए नए क्षेत्र इसके माध्यम से खुल रहे हैं। खेलों के क्षेत्र में भारत ने ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स में नए आयाम स्थापित करने का काम किया है और आत्मनिर्भर भारत के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत को भी पूरा करने का काम किया। आपके बीच में ही यूथ अवार्डीज भी हमारे बीच में हैं, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, स्पिरिट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि आप जब आए हैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से बाकी युवाओं से जरूर मिलिए और उनके साथ देश को घूमने का प्रयास अवश्य कीजिए। आप जितना भारत घूमेंगे, भारत की विशेषताओं को भी जानेंगे, भारत की समस्याओं को भी जानेंगे और कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान करने में भी आप एक बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। Rather than taking more time, I'll end with a quote from the Honorable PM. He once remarked that when it comes to our diaspora, be it non-resident Indians or the persons of Indian origin, we don't look at the color of the passport, but only the blood relationship. हम पासपोर्ट का रंग नहीं देखते, खून का रिश्ता देखते हैं। और कहीं ना कहीं आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, ये खून का रिश्ता हमें एकजुट करता है, भारतीयता का रिश्ता हमें एकजुट करता है। And Indians, be it in India abroad, have always held their heads high and hearts open to lead the world in the bold and bright future that awaits us. With these words, I invite you to innovate, invest, and initiate your ideas in India. So welcome to the youth or Yuva Pravasi Bhartiya Divas. And once again, I just would like to remind you, you are going to explore this beautiful city of Indore, महाकाल लोक, ओंकारेश्वर मंदिर। आप भारत के समृद्ध और गौरवशाली इतिहास को देखिए ही, लेकिन रात को 10 बजे से सुबह के 2 बजे तक इंदौर के सराफा बाजार में जाना मत भूलिए। अगर आप सराफा बाजार में गए बिना चले गए तो आपकी ये विजिट बिल्कुल अधूरी है। और अगर आप एक बार चले गए तो समझ लीजिए अगली बार इंदौर में जहां साथ में लगते महाकाल लोक, ओंकारेश्वर मंदिर से बहुत सारे आकर्षण आपके लिए होंगे, उनमें से सराफा बाजार भी आपको बार बार निमंत्रण देगा। एक बार फिर आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत। जय भारत, जय हिंद। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रही है दुनिया तुम में उजियाले विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को। नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो आकाश में, उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में। मध्य प्रदेश सफलता के सोपान चल रहा है, नित्य नई विकास की गाथाएं लिख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की छत्र छाया में माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश बड़ी श्रद्धा से, बड़ी समर्पण भावना के साथ मध्य प्रदेश वासियों की सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं। हमारा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि कृपया हम सबको संबोधित करें। कैसे हैं आप?
ठीक से बताइए ना, कैसे हैं आप? इंदौर कैसा लगा? खुश हैं सब? तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। हमारे विदेश मंत्री आदरणीय डॉक्टर एस जयशंकर जी, मिस जेनेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया, हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर, एक बार ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। हमारे यूथ मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जिन्हें आप अभी बड़े ध्यान से सुन रहे थे, अनुराग ठाकुर जी। राज्य मंत्री हमारे निशीथ प्रमाणिक जी, विदेश सचिव डॉक्टर आसफ सईद जी, सचिव युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय सुश्री मीता राजीव लोचन जी, यहां उपस्थित भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्री साथीगण और पूरे दुनिया से यहां पधारे हुए मेरे बहनों, मेरे भाइयों और भांजे और भांजियों, मैं मध्य प्रदेश वालों का मामा हूं तो आपका भी मामा ही हुआ। इंदौर में आपका हृदय से स्वागत, और केवल मेरी तरफ से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और स्वागत केवल शब्दों में नहीं है, यह स्वागत आत्मीय है, यह स्वागत भावनाओं से है, और वो भावनाओं का प्रकटीकरण आप इंदौर की सड़कों पर देख रहे होंगे। विद्युत बल्ब की लड़ियों से इंदौर सजाया गया है, रंगोलियां बनाई गई है। केवल स्वागत द्वार नहीं बनाए, इंदौर की जनता ने पलक पौड़े आपके लिए बिछाए। या इंदौर में तो झगड़ा हो रहा था, झगड़ा इस बात का कि जब आ रहे हैं तो होटल में काय को ठहरेंगे, हम अपने घर ठहराएंगे। हर एक ललायत था, हमारे घर ले चलो। सचमुच में आप सब आए, मैं हृदय की गहराइयों से, क्योंकि मध्य प्रदेश है देश का दिल, हार्टलैंड ऑफ इंडिया, और आप हैं हमारे दिल के टुकड़े। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र भारत, जब दुनिया के विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना, लेकिन भारत के ऋषियों ने तो हजारों साल पहले कह दिया था, अयम निजम परावेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इसी मूल मंत्र को आत्मसात करके केवल भारत नहीं, आज दुनिया की सेवा कर रहे हैं। लेकिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस है। मित्रों, युवा वो नहीं है जिसकी उम्र 15 साल से लेकर 30 साल की होती है। युवा वो है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो है जिसके सीने में आग होती है। युवा वो है जिसकी आंखों में सपने होते हैं, और युवा वो है जो उन सपनों को साकार कर कर ही चैन की सांस लेता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वो शब्द मुझे आज याद आ रहे हैं, तुम केवल 3.5 हाथ के हड़ मास के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, और अमर आनंद के भागी हो।
दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। और भारत के युवाओं ने दुनिया में सच में वो करके दिखाया है। कामयाबी हाथ की लकीरों से नहीं मिलती, कामयाबी माथे के पसीने से मिलती है। और वो सफलता के झंडे भारत के युवाओं ने गाड़े हैं। दुनिया में जहां जहां गए एक अलग पहचान बनाई। और सचमुच में दुनिया के लगभग सभी देशों में अलग अलग क्षेत्रों में आज भारत का डंका अगर बजाया है तो आपने बजाया, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक व्यक्ति अगर सोचे, एक व्यक्ति अगर ठान ले तो दुनिया बदल सकता है। और मुझे कहते हुए गर्व है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर। मुझे 2014 याद आता है, भारत के प्रधानमंत्री ने हाथ में झाड़ू थामी और कहा स्वच्छ भारत, तो पूरे देश ने हाथ में झाड़ू थाम ली। और इंदौर ने तो स्वच्छता में छक्का लगा दिया, सिक्सर मारा है, लगातार 6वीं बार नंबर 1। और मध्य प्रदेश भी ओवरऑल नंबर 1। प्रधानमंत्री जी ने कहा मेक इन इंडिया, तो सारी चीजें भारत यहां बनाने लगा। डिजिटल इंडिया, तो दुनिया का 40% डिजिटल पेमेंट आज भारत में हो रहा है। स्किल इंडिया, यूथ स्किल हो गए। आज सचमुच में अनेकों क्षेत्रों में भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत का, आत्मनिर्भर भारत। और आने वाले कल में भारत को ज्ञान शक्ति, अर्थ शक्ति, प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाना है 2026 तक। तो अर्थ शक्ति और आत्मनिर्भर शक्ति बनाना है। इसके लिए जरूरी है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी। और इसलिए जब मैं इनोवेशन की बात करता हूं, नवाचार, जहां तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करो, सचमुच में तुम अद्भुत काम करोगे। नवाचार क्या है? जो विचार दिमाग में आए उसको जमीन पर उतारनी तो नवाचार है। कहते न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिरा। अब ये साधारण घटना थी, लेकिन न्यूटन सोचने लगे, हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, तो जमीन पे क्यों गिरा? वो ऊपर क्यों नहीं गया? वो बीच में क्यों नहीं अटका? अब वो सोच रहे थे, उत्तर मिला नहीं। तो कहते हैं आने जाने वाले लोगों को उन्होंने बुलाया और कहा एक प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। लोगों ने कहा बताओ क्या? तो न्यूटन ने कहा हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिरा। तो लोगों ने कहा जमीन पे नहीं गिरता तो कहां गिरता? बोले ऊपर क्यों नहीं गया, आसमान में क्यों नहीं अटका? तो लोगों ने कहा ये तो गड़बड़ हो गए कुछ। अरे जमाने से देखते चले आए, ऊपर से कोई फल टूटता तो नीचे ही तो गिरता है। लेकिन न्यूटन सोचते रहे और अंत में उन्होंने खोज के निकाला कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है और इसलिए अगर कोई वस्तु टूटती है तो वो नीचे गिरती है। ये नवाचार है और भारत के नौजवान नवाचार कर रहे हैं। इनोवेटिव आइडिया आया, लेकिन आइडिया पर्याप्त नहीं है। उसके लिए रोड मैप, उस रोड मैप पे चलने के लिए परिश्रम, रिस्क, नदी के विपरीत दिशा में तैरने का साहस, ये करना पड़ता है, तब नवाचार के रूप में सफलता मिलती है। और सचमुच में जब मैं नवाचार की बात करता हूं तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एडोब, IBM, मास्टर कार्ड जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऑफिस में अगर आप देखेंगे तो केवल भारतीय ही भारतीय नजर आएंगे।
यह भारतीय मेधा और विश्वसनीयता है कि इन कंपनियों के डेवलपमेंट लैब से लेकर बोर्ड रूम तक भारतीय आसीन है। आज हमें गर्व होता सुंदर पिचई, सत्य नडेला, शांतनु नारायण, अरविंद कृष्णा, सुश्री लीना नायर, राज सुब्रमण्यम, सीएम बेक्टा कृष्णन, राजीव सूरी, इंदिरा नूई, अजय बांगा, कितने नाम हैं ऐसे, कितने नाम जिन्होंने सफलता के नए इतिहास रचने का काम किया है। और मित्रों, इनोवेशन अकेला नहीं, अगर आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी भी जरूरी है। और टेक्नोलॉजी की बात अगर मैं कहूं, अगर डाली पे पक्षी बैठा है और डाली कमजोर है फिर भी वो डाली पर बैठा है, तो इसलिए नहीं कि उसे डाली पर भरोसा है, बल्कि इसलिए कि उसे अपने पंखों पर भरोसा है। अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर भरोसा। और मित्रों, आज टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो भारत के प्रवासी युवाओं ने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के दम पर न केवल अपना लोहा मनवाया है, बल्कि कई स्थानों पर ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि यदि भारतीय ना हो तो कंपनियों का काम ही ठप हो जाए। और इसलिए ये जो दोनों विषय हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, न केवल देश की प्रगति और विकास के लिए, बल्कि दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के युवा आज सर्वश्रेष्ठ देने का काम कर रहे हैं। खेलो इंडिया से लेके स्टार्टअप इंडिया तक, स्किल इंडिया से लेके मेक इन इंडिया तक, अटल टिंकरिंग लैब से लेकर 5G टेक्नोलॉजी तक, हर क्षेत्र ने भारतीय युवाओं ने अपनी प्रतिभा के बल पर नए रिकॉर्ड स्थापित किए। अभी अनुराग जी बता रहे थे, 100 से अधिक स्टार्टअप को यूनिकॉर्न और 4 स्टार्टअप्स को डेकाकॉर्न बनाया। ये इंदौर, अकेले इंदौर में 1500 से ज्यादा स्टार्टअप्स यहाँ के नौजवानों ने प्रारंभ किए हैं। और मध्य प्रदेश की गांव-गांव से नौजवान निकल रहे हैं अपने इनोवेटिव आइडियाज लेके। लगातार जो बातें अनुराग जी ने कही मैं दोहराना नहीं चाहता, लगातार भारत आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश लगातार प्रयास कर रहा है। मैं आज गर्व के साथ बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की विकास दर करंट प्राइजेज पे इस समय 19.76% है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं इनोवेटिव आइडियाज को लेके। यूथ पॉलिसी मध्य प्रदेश अब हम नहीं बनाने वाले हैं। अनेकों क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा की गुणवत्ता हो, चाहे वो मध्य प्रदेश को स्किल करना हो, ग्लोबल स्किल पार्क मध्य प्रदेश में बन रहा है। हमारे आईटीआईज को हमने बेहतर करने का प्रयास किया है। एक नहीं, ऐसे अनेकों प्रयास मध्य प्रदेश में भी निरंतर जारी है। मैं एक बार फिर आप सबका मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। और अनुराग जी ने कहा है, सराफा जाना मत भूलना, लेकिन 56 दुकान भी जरूर जाना। अद्भुत है इंदौर और सचमुच में अद्भुत है मध्य प्रदेश। जन संपदा, जल संपदा, वन संपदा, खनिज संपदा, यहां महाकाल महालोक है। जाना, लेकिन शाम के समय जरूर जाना। रात में महाकाल महाराज की छटा अद्भुत होती है। यहां ओमकारेश्वर है, 2 ज्योतिर्लिंग, 3 वर्ल्ड हेरिटेज, 11 टाइगर पार्क है हमारे। और टाइगर पार्क भी ऐसे कि कई बार टाइगर से हैंडशेक करने की नौबत आ जाती है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, मध्य प्रदेश लेपर्ड स्टेट है, मध्य प्रदेश बल्चर स्टेट है, और अब तो मध्य प्रदेश चीता स्टेट भी बन गया है। इस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। जब कोई इनोवेटिव आइडिया आए और आपको लगे कि मध्य प्रदेश में जमीन को उतारना है, तो मामा को याद कर लेना, आपका साथ देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर आप सबका इस धरती पर हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आप आए, मध्य प्रदेश धन्य हो गया। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। और अंत में केवल एक बात कह के, ये नहीं
है नहीं ये हाथ केवल हाथ मलने के लिए, तू इन्हें मुट्ठी बना दुनिया बदलने के लिए। भारत भी बदल रहा है, दुनिया भी हम बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी। हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश में आप इस वक्त हैं, सबसे स्वच्छ शहर भारत का इंदौर में। We feel privileged with the august presence of the Honourable Member of Parliament Australia, Ms. Janita Mascarenhas. May I request you, Madam, to kindly address us. जोरदार तालियों से स्वागत हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर। Namaste and Dhanyavad. I would like to acknowledge the External Affairs Minister, Dr. Jay Shankar, for his invitation to present today. I feel very privileged to be here. I acknowledge the Honourable Shri Shivraj Singh Chauhan, Chief Minister, Madhya Pradesh, for hosting us in this beautiful state. I'd like to thank the Minister for Youth Affairs, the Honourable Shri Anurag Singh Thakur. I thank him for the opportunity to be here to address the youth plenary session. And to His Excellency, Prime Minister Narendra Modi, it is a great honour to be back here in incredible India. Australia's relationship has never been closer. The Indian community is our fastest growing diaspora, and our nations have shared interests, challenges, perspectives, and a strong belief in democracy. I know that my Australian Prime Minister, the Honourable Anthony Albanese, is looking forward to visiting India later this year. India, for me, is a kaleidoscope of colours, culture and senses. I was 15 years old when I first travelled to India. Honestly, I felt trepidatious and was unsure what to expect. There were several impressions that India gave me. The first, my extended family had so much love to give, even though I lived overseas. We are close, and my Indian cousin Noel has travelled to join me here. My dad has an incredible work ethic, but then I understood that this is a shared trait of my whole extended family, but really the Indian diaspora. There is so much vibrancy and colour here, whether that be the clothes we wear or the food we eat. Finally, I remember the kindness strangers gave me just because of my grandmother's reputation for Lisa Dad as a kind and giving woman. India is a diverse country. The sleepy backwaters of Kerala represent an aquatic paradise. The desert skies of Gujarat offer glittering star-spangled skies. Or here in Indore, the street food here is a flavour sensation, as I learnt last night. And for me as a Goan, it's famous for its New Year Eve parties, but for Goans, we start the new year by going to midnight mass. India's diversity is what makes this country seem like it's contradictory, but rather, I like to think of it as a country that has duality, two opposite parts that coexist. I think it's this duality that helps the Indian diaspora be so successful. Mixing old ideas is not new or unfamiliar concept to India. India is arguably one of the most successful nations who practices ancient religions while embracing new technologies and boasting cities like Bengaluru and its own thriving movie industry. Duality happens on a national level, but I think it happens on an individual level too. Minister Thakur showed this by speaking in both Hindi and English seamlessly. As we, the Indian diaspora, seek to do great things around the world, we fall in love with other countries and create new lives and worlds for our family. We then get to blend the best aspects of Indian culture with the best aspect of another country, and essentially, we create a third culture.
Following this, I'd like to talk about some members of the Australian Indian diaspora who are at the forefront of innovation and new technologies. Ajay Prakash had the vision to empower 1 billion people to discover meaningful work through his education startup called Entry Level. He is one of Australia's top 100 innovators and is a Forbes Under 30 entrepreneur. Ajay's platform delivers short, intensive, affordable programs with professional mentors from companies including Atlassian, Wise and StartMate. Recognising that almost 200 million jobs were lost during 2020, largely due to COVID, Ajay wanted to think about ways to reskill people. Ajay's ambitious goal is to prevent mass unemployment by 2030. The thing that I find particularly refreshing about Ajay is that he openly talks about failing. Culturally, this is something that I think many of us would struggle with. However, smart entrepreneurial culture has taught me that it's smart to fail fast and fail small to crack open the next innovation. Then there's Veena Shawajala, who's a material scientist, engineer and inventor. She's the recipient of the Pravasi Bhartiya Divas. She is passionate about waste. She was talking about green steel production before it was cool. She thought that it would be smart to use end-of-life tyres to replace coal and coke in steelmaking. The Pulitzer Prize-winning author Charles Duhigg told us that innovation happens by mixing old ideas in new ways. Well, Veena was literally doing this by diverting almost 200 million tyres from landfill and then using them in the furnace during steel production. This reduces costs and reduces greenhouse gas emissions. Talking about net zero emissions, that's quite an accepted term worldwide. In time, we will talk about net zero waste, aka the circular economy. So for manufacturers in the audience, I ask, can your products be repaired? Or even better, can they be upgraded or retrofitted? And once your product reaches the end of its life, can it be recycled or repurposed? The final person I'll talk about is an engineer from Australia who has worked in climate change the last 12 years. Her dad, Jose, an Indian metal worker, wanted to migrate from Kenya to Australia. Australia had a skills shortage. However, the Australian embassy explained to Jose that he had the right skills but had the wrong colour skin. Back then, the White Australia policy existed. Eventually, successive Australian governments dismantled this policy and Jose migrated to Australia with his wife and daughter. They lived in a multicultural mining town called Kambalda, where all cultures were celebrated. His youngest daughter was born in Australia and studied engineering and worked on the mines. She had a passionate and worked in climate change action for 12 years. She helped large companies reduce their carbon footprint. She loved her work and became the team leader. The policy environment was tough. In Western Australia, there are currently floods in the north, while in the south there are bushfire warnings. I'm sure that we would all agree that climate change is wreaking havoc across the world. Action by the Parliament was required. She was asked if she would run in the federal election to become a Member of Parliament. She was a mum of a 2- and 5-year-old. Federal politicians in Australia are required to be in Canberra, the capital, for almost half the year. The person I describe above is me. This is where I will share that my husband is my biggest supporter. He believed that I could win and make a positive difference in Australia, but equally he was not daunted on needing to lead parent alone for half the year. Having a supportive partner is invaluable. When deciding on whether to run or not, I reflected on my family's history and recognised that politics can be personal, powerful and transformative. My Australian story would not be possible if it wasn't for the Australian government wanting to become the world's most successful multicultural nation. And in the end, I decided to do what mattered.
Last year, Australia voted to change the government. So how on earth did I get elected up? Well, we all know that Indians in the Indian diaspora have a tremendous work ethic. And as the Minister explained before, we have an unflinching spirit. My team and I knocked on 45,000 doors. For the first time in 5 terms, I won the seat of Swan. I became the first woman and the first person of colour to be elected to that seat in its 101 history. I can't tell you why I definitively won. One strong factor is the character of the new Australian Prime Minister, Anthony Albanese. Authentic leadership matters. But I also think that my electorate wanted to have more diversity in Parliament, not just gender or ethnic background, but my skill set too. My electorate loved that I am a working mum and engineer. I want to leave you with this thought. The Indian diaspora combines 2 cultures to create a 3rd culture with the best of both worlds. I encourage you to do what matters. And going further, you should think about your legacy. I reflect on my grandmother's, Felicidad's, tremendous legacy. She passed away 29 years ago yesterday, and even though I never met her, her presence was always felt strongly, long after she left our earth. So I'd like to ask you, what will your legacy be? थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। बाहरी देशों या विश्व के किसी बड़े मंच पर हमारे भारत देश के बारे में पेचीदा सवालों के सटीक तथा निरुत्तर कर देने वाले जवाब यदि आप सुने तो बेशक वो आवाज़ हमारे विदेश मंत्री अनन्य राष्ट्रभक्त माननीय डॉक्टर एस जयशंकर जी की ही होती है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप में सफल विदेश नीति को अंजाम दे रहे हैं। May I request Honorable External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar ji to kindly address us and show us the way forward. Respected Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Chauhan Singh Ji, Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur Ji, Guest of Honor, Ms. Zeneta Mascarenhas, Member of Parliament, Australia, my ministerial colleagues in the Foreign Ministry, Shri Muralidharan Ji, Srimati Meenakshi Lekhi Ji, Dr. Ranjan Ji, Minister of State for Youth Affairs, Shri Nishit Pramanik Ji, Ministers of the Madhya Pradesh government, Secretary Asif Syed, who deals with diaspora affairs, Secretary Neeta Rajiv Lochan, friends, my youthful delegates from India and abroad. Let me first of all extend my warmest greetings to all of you. My welcome at the first event of the 17th Pravasi Bhartiya Divas Convention, which is the Youth Pravasi Bhartiya Divas. We all know why we are here. We are here because in the I would say memorable words of the Prime Minister at a legendary diaspora event, he said that हमारा तो खून का रिश्ता है, पासपोर्ट का नहीं. And that one phrase, I think, captures the entire complexity of a relationship that we have today with 34 million people of Indian origin and non-resident Indians abroad. And that is what brings us here every 2 years for this convention. So
even as we meet here, there are many who are not here with us today, but who are watching it, who will take heart from what we are doing, who will be enthused by the renewal of this relationship. And so that is a larger emotion which will definitely be in all our minds over the next 3 days. We are also gathered here as India marks 75 years of independence and prepares for the next 25 years ahead. This is an era where we are increasingly confident about our prospects, and when we seek to connect more closely with the Indian community, with the international community. And that is why I'm particularly glad to see that the guest of honor today is from our Quad partner, our Indo-Pacific partner, Australia. Today's session is devoted to assessing the progress in connecting with the diaspora, and obviously with a special focus on the role and contribution of the youth. Now, before I come to the subject, I think I would be remiss if I did not thank the Honorable Chief Minister, Shivraj Ji, and the government of Madhya Pradesh, his whole team, because people have spoken about Indore as the cleanest city. I think all of you already know it is the city with the largest heart, the warmest feeling, the greatest hospitality. And I have not yet been to Sarafa Bazaar, but I went to Chappan Dukan yesterday. And I think two-way street, which is promoted particularly by activities like the Pravasi Bhartiya Divas. This relationship was very much in evidence amidst the challenges of the COVID pandemic. On its part, the Government of India undertook the Vande Bharat mission and the Vaccine Maitri initiative, which were focused significantly on our diaspora-centered partners. We recognize too the tremendous response that we got from the PIO NRI community during the most difficult moments of our own COVID experience. So as we meet today, I can truly say that our bonds have become even stronger as a result of all the trials and tribulations that we went through during the COVID period. Now, those of you who are coming to India after a gap would surely notice the many changes that have taken place, I would say in the last 8 years, but especially in the last 3 years. Notable among them is the extraordinary scale of digital delivery that has made possible access to social benefits, and that too without leakage. Equally evident is the improved health infrastructure, and indeed the greater awareness and expectations on that score. You would also see enormous infrastructure activity. In fact, as you come in from the airport, you can see the construction which is going on. And these are propelled by the Prime Minister's Gati Shakti initiative. But most of all, you would sense the optimism in our society and the highlighting of the role of the youth. Whether it is startups or sports, whether it is technology usage or tourism, the energies of young India are increasingly visible. This is what has led us to define the theme for this year's Youth PBD. The younger generations are also very much in the forefront of connecting India to the world. They do so not only through their activities at home, but by studying, working, and traveling abroad. Our endeavor is therefore to maximize support for them and to ensure
that they realize the benefits and achievements that are due to them. We strive to create a better workplace, a more secure traveling experience, and a non-discriminatory treatment abroad. It could take the form of migration and mobility partnerships, as we have done recently with Germany, Denmark, Portugal, France, and UK, just to give you some examples. Or a working holiday program, as we have just signed with Austria, or the more liberal working conditions that have been extended by the Australian government, or for that matter, more predictable and liberal visa and work provisions in some other nations. It may be the services and support provided by the Indian Community Welfare Fund, or even something as simple but as important as the swift replacement of a lost passport, and the more efficient rendering of consular services. The redressal of grievances in a transparent manner through online mechanisms like Madad is by now well established. The biggest difference, however, is the higher standing of India and the stronger relationship that we have established with virtually every nation that hosts our community. This is reflected in your stature and standing in these societies. The identity of a diaspora is very much derived from how closely it is connected to its roots. Here too, our efforts have been to encourage easier exposure to Indian culture and traditions abroad. Many of our embassies, in fact, I think most of them today, now offer yoga, dance, and music classes. We ask them also to support and facilitate community functions and collective activities. It is a matter of pride for us that centers of faith are growing abroad. And I think the one in Abu Dhabi has attracted particular attention. That centers of faith are going abroad because they also serve to inculcate values, promote culture, and nurture traditions. The youth living abroad today, therefore, has many more opportunities than before to stay connected. Having said that, we believe that this is never enough by itself. There is always room for improvement in schemes like the Know India program that we intend to expand, the Bharat Ko Janiye quiz, and the scholarship program for diaspora children. It is also our expectation that the new education policy will create more pathways for a deeper involvement of the diaspora, and you will be hearing from my colleague, Shri Dharmendra Pradhan ji, about this in the coming days. Within the country, Prime Minister Narendra Modi has urged us all to focus on the Amrit Kal, the period leading up to a century of independence. It is important that the Indian community abroad also does the same. They would be justified in asking themselves, how can they make a difference to India's future? In the past, the answers may have been more in the realm of resources and opportunities. Today, it is in the era of a knowledge economy. It is much more in a world of technology, of ideas, and of innovation. So my message to you today is that India is changing in front of our eyes, and at a pace and manner that is unprecedented. We have a leadership that is providing both the vision and the guidance to emerge as a leading power in the days ahead. I'm very confident that the Indian youth at home and abroad will take up the challenge and help to propel this country to greater heights. Thank you, and Jai Hind. Thank you, sir, for your very insightful and inspiring speech. Thank you so much.
May I now call upon Ms. Meeta Rajiv Lochan, Secretary Department of Youth Affairs, to kindly propose vote of thanks. कृपया आभार प्रकट करें. Friends, first of all, I would like to thank Honorable Chief Minister Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chauhan ji, for hosting the Yuva Pravasi Bhartiya Divas in such a very wonderful way. He is a most dynamic Chief Minister. We only have to go out on the streets of Indore to see the impact of the work done by him and his team. Thank you, sir, for making this such a memorable event and for making everyone here feel so welcome and so comfortable in the highest traditions of Indian hospitality. Next, I would like to thank Honorable Union Affairs Minister for Youth Affairs and Sports, Anurag Singh Thakur sir, for his constant guidance and support. Sir's dynamism and energy is very visible in the way that the landscape of youth affairs and sports in India has changed. If Indian athletes have received so many accolades and have won so many prizes in the recent past, that has everything to do with his energy and his constant guidance and support. Thank you, sir. It is an absolute honor, friends, today to have with us Honorable External Affairs Minister, Dr. Subramaniam Jaishankar. Dr. Jaishankar has changed the narrative of Indian foreign policy. If countries across the world look up to India today, that has everything to do with him. We as Indians feel so proud, sir, when we hear you speak, and it is wonderful to have you with us today. All those present would benefit from your enormous experience and wisdom. Very grateful thanks to you. I would also like to thank Honorable Minister of State, Shri Nishit Pramanik ji, for his guidance and support. Thank you to Ms. Zaneta Mascarenhas, Member of Parliament from Australia, for coming here and being with us and sharing her experiences on this occasion. Thank you, Madam. I would also like to thank Secretary, Ministry of External Affairs, Dr. Asaf Saeed, and the entire contingent of the MEA for helping us to organize this function. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सचिव।